Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. As today we are going to start our science class for 5th class, term 1. Okay, today we are going to start our science class for 5th class, term 1. As in previous class, we started our first lesson. Have you remembered the name of the first lesson? What is our first lesson name? Reproduction in plants. Okay, reproduction in plants. As in previous class we learned the structure of a seed. Okay, today's class we are going to learn about the germination. Okay, germination, the process by which a seed produces a new plant is called germination. These are the different stages of germinations. So what is here germination? Germination is nothing but we are producing a new plant with the help of a seed. By sowing the seed under the soil we are getting the new plant. It is nothing but by sowing the seed under the soil and we are getting the new plant. That sowing the seed into the soil, the process is called germination. Okay, it takes the following steps. Germination के लिए different stages होते हैं. When a seed falls or is sown in the soil, it takes water and nutrients from the soil. It also takes in sunlight and air. When seed falls, जैसे अपन seed को sown कर दे, जैसे सॉइल के अंदर अपन सीड को लगाने के बाद क्या होता है वहाँ पे इट टेक्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. व्हाट इट टेक्स इफ यू आर पोरिंग द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल these seed takes the water and nutrients from the soil and it also takes the sunlight and air. Okay, after a few days the seed coat breaks and the baby plant comes out. After few days what happened? After this taking all this water, nutrients, sunlight, and after few days the seed coat will break the baby plant inside the seed and it comes out. It comes out on the ground. Okay, the root of the baby plant grows downwards and its bent in tiny shoot grows upwards in search of air. So what happened? The root of the baby plant grows downwards. जो root रहता है ना, root कहाँ पे होता है? अंडरग्राउंड में. और उसका स्टेम कहाँ होता है? ऊपर सॉइल के ऊपर. ओके, and sunlight. The baby plant at this stage is called a seedling. So the baby plant which is small, the roots are under the soil and the tiny stem and the shoot is on the soil. At the stage the baby plant is called as a seedling. Okay, a seed germinates only when it gets sufficient air, water, sunlight and nutrients. So how we are getting the new plant means a seed should be germinate properly. It should have an sufficient air. उन लोगों को compulsory water, air, sunlight, nutrients चाहिए तो seed grow होता. Okay, if there is if there is an unnecessary air, water and sunlight, it does not grow. Okay, next here, dispersal of seeds. A plant produces many seeds. If all the seed falls and germinate near the mother plant, they will not get enough sunlight, food, water and space to grow. So here dispersal. A plant produces many seeds. Have you seen any big plant? It will have many flowers. That flowers grow into fruits and fruits will bear into seeds. So a plant will have many seeds. So if all the plants that are falling near the mother plant, जैसा बड़ा पेड़ है वहाँ पे सारे उसके बीन्स रहते हैं ना, सीड्स नीचे गिर जाते हैं. तो वहाँ पे क्या होता है? सीड्स नीचे गिर जाने पर क्या है वहाँ पे न्यू प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं. और न्यू प्लांट्स पूरे वहाँ पे ग्रो नहीं हो सकते. क्यों नहीं हो सकते? वहाँ पे प्रॉपर एयर, सनलाइट कुछ भी उन लोगों को नेसेसरी सफिशिएंट, उन लोगों को जितना लगता है उतना सफिशिएंट उन लोगों को एयर, वाटर, सनलाइट नहीं आता. नहीं आने की वजह से क्या है? प्लांट्स उन लोगों को स्पेस नहीं देते, प्रॉपरली ग्रो नहीं हो जाते, वो मतलब बढ़ते नहीं वो लोग. Therefore, the seeds need to be scattered to distant places so that they grow in a healthy plants. The scattering of seed or fruits away from the mother plant is called dispersal. जैसे अपन पूरे एक जगह ग्रो नहीं होते प्रॉपर में, जैसे प्रॉपरली ग्रो नहीं होते तो क्या करते हैं अपन? वो सीड्स पूरे मदर प्लांट से हटा के दूसरे प्लेसेस में जाके अपन ग्रो करते. क्यों? मतलब उन लोगों को प्रॉपर सनलाइट और स्पेस नहीं रहता ग्रो होने के लिए, और सनलाइट, वाटर, मिनरल्स रहता, प्लांट्स ग्रो नहीं होते. इसीलिए वो सीड्स पूरे लेके जाके दूसरे प्लेसेस में उन लोगों को ग्रो करते, इसीलिए वो प्रोसेस को डिस्पर्सल बोलते. ओके, द प्रोसेस विच इज कैरिंग अवे द सीड्स फ्रॉम द मदर प्लांट टू द डिफरेंट प्लेसेस, दैट इज कॉल्ड हैज एन डिस्पर्सल. ओके, एंड योर होमवर्क इज, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द क्लास, एंड योर होमवर्क इज you have to write these names, you have to draw these pictures. Okay,
dandelion, fine hair, sycamore, dispersed by wind. These two, only these two, okay? Dandelion and sycamore. Thank you.